question sound. இல்ல போகுதா? Yes, sir. இல்ல போகுதா? Sir, बोलने दीजिए sir. ओके, ठीक है. Very good evening all of you. How is everyone? Is audio video clear? Just give me the comment. Is audio video clear? Yeah, very good evening all of you. कैसे सब लोग? How is everyone? How is the preparation going on? All good? Prepared very well for programming a data structure? Ready है सब लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार कमेंट कर दो. Yeah, I am also good. Fine. ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो. ऑडियो वीडियो क्लियर है? Okay, excellent. So in this session we are going to discuss okay, get through questions. We are having programming and data structures question practice series. So we are going to discuss the various questions based on the programming and data structures. So some questions are easy, some questions are tricky, okay, some difficult questions are also there. So be ready with the papers and pen and try to give your comments, okay, in the live. Okay, be active and I'm requesting everyone to participate. Okay, all of you participate. Everything is clear, right? Ready है सब लोग? Be ready with the paper and pen. Okay, right. So I'll give the sufficient time, okay, don't worry, but try to focus on accuracy first. Okay, speed is also matters, but the first thing is what? Accuracy. Okay, right. So do not waste the time. So let's move on around. Okay, better not to waste the time. So let's move on to the first question. Okay, first question on the screen. Carefully read the question. Carefully read the question. The question is based on the one-dimensional array. Question is based on the 1D array. What is the output printed? And remember, the question is the numerical type question. Everyone must participate. Read the question carefully and try to evaluate. The question is based on 1D array. You can just make the rough diagram. I think question is visible clearly. Question तो ठीक से दिख रहा है ना? I think very clearly visible.
Every one of you, just give the comments. Carefully read the question because accuracy is important. So, if you know the clear-cut complete concept with respect to 1D array, the question is very simple. If you clearly know the 1D array concept, the question is very simple. Those who are in the live, don't waste your time. Try to solve the question with the paper and pen. Saurav, what is the answer? I think you have given. Okay. There are many people. Vidhi Jain, it's MSc trend. There are many people who are still not yet given the answer. Vidhi Jain, I think you have given the answer. Okay. Sandeep Pal, just verify your answer. Vidhi Jain, Sandeep Pal, Rahul, Sartak. Just verify your answers. Question is simple, very simple question based on the 1D array. This is not the tricky question. Okay. Those who are in the live, requesting everyone to solve the question. It's a very good question based on the 1D array. Very good question. Not very tough question. So I'm revealing once again, not very tough question. The question is very much doable. Question is doable. It is not a very tough question. Okay, right. So I think we cannot wait more than this much time. So this question will not take maximum 2 to 3 minutes. If your concepts are very clear, so this question will take maximum 3 minutes. I say maximum 3 minutes. Okay. So time up, guys. Hope I gave sufficient time. Okay. Your friend is saying, sir, better apply, poll apply karo. Chalo, we'll see that. Okay, right. So this is the 1D array. So it's okay. Stop solving. I am going to explain that.
Kaushal Gupta, verify your answer. Samarth, verify your answer. Sandeep Pal, verify your answer. I said. फिर से चेक करो एक बार. Last 1 minute, I'll wait. जो लोग लाइव में हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. लाइव में भी सॉल्व करो, पेपर पेन रेडी रखो. जो लोग लाइव में हैं सब लोग सॉल्व करो. Okay, it's okay. Now time up. Okay. Now this is the 1D array you are having, so you can just make the numbering. Okay, so if you want, you can just take like this. So it's okay, 0, 1, 2, 3 like this. So I'm not making the special diagram. I can do it directly here only, right? So this is the array. This is the 0th element. 0, 1, 2, 3. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, array index always start with 0. Everybody knows that. So int star p, p is the integer pointer, right? So p is pointing to arr plus 1. Okay, array name without subscript will contain base address of what? 0th element. So arr plus 1 करेंगे तो p is pointing to what? Okay, first element. So see this here, p is pointing to this one. Okay, this one is clear. And q is pointing to what? arr plus 7. So arr plus 7 means plus 1 करे तो इधर, plus 2, plus 3, 4, 5, 6, 7. So q is pointing to this one. Pointer p is pointing to this element. Okay, q is pointing to this element. So that is clear for everyone. Just give me the comment. P is pointing to this element and q is pointing to this element. This one is clear for everyone. Correct? Okay, alright, that is clear. So let's move on to the next one. You can solve one by one. Okay, no need to worry, right? So p of q minus p. Now I'll write the addresses also. Let's say this is the base address is 100. Just assume. So this is 102. Okay, 4, 6, 8. Okay, 110, 112. Okay, 14. So this is 16, 18, 20, 22, 24. So it means last one is 124. Okay, right? So this is 100, 102, 104, 106 and 108. Okay, hope you can understand this. 114, 116, 118, 120, 122 like this. Every element 2 bytes. I am just assuming integer is a 2 bytes. Okay. Now come back to this. Now q में क्या है बताओ? 114, 114 minus p में क्या है बताओ? p में 102 है. इसका एड्रेस है. So that is the 102 है. Okay. Minus क्या है बताओ? 3 है. This is the addresses. These are the addresses here, right? Subtraction between two pointers is allowed. Yes. So ये subtract करे तो ये क्या आएगा? 114 minus 102. Indirectly number of elements from here to here. That is the okay 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So if you want, I can write it here. So this will be what? 12. 12 divided by 2 होगा. So the answer is what? 6. So indirectly इसका पूरा ये क्या हो रहा है? What is the value you are getting? 6 minus 3. Correct? So I am writing here. So very clearly I am writing here. So this value is coming as P of 6 minus 3. So P of 6 minus 3 means what? Okay, P of 3 only. So what is P of 3? P is pointing to this one. Check करो यहाँ पे. P is pointing to this. Okay. P of 3 means what? P plus 3 whole star. Plus 1 करे तो इधर. Plus 2 plus 3. So this entire value is what? 5. Okay. This entire value is 5. Okay. Clear? So this entire expression value is the 5. Okay. Very clear. Now next Q minus 5 whole star. अब बताओ Q is pointing to this one. Minus 1 बोले तो इधर. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. So q minus 5 means it pointing to this one. Na whole star लगाया तो evaluate that. So that is 3. So this entire expression value is what? Okay, 3. This entire expression value is 3. So this is the 5 minus 5 plus 3 हो गया. Now you find out this one, sir. Okay, p plus 2 whole star. What is p plus 2 whole star?
यू p is pointing to this one, p plus 2 करेंगे तो क्या होगा, plus 1 करे तो 104, plus 2 करे तो 106. So this is 106 whole star. Value at the location 106 whole star. What is that here? This entire value is what? 4. Next, indirectly, what is this value becoming? A plus 4. A plus 4 whole star. अब बताओ a plus 4 whole star. A is pointing to this one. Okay. Array name without subscript will point to what? 0th element. A plus 4 चाहिए. Plus 1 करे तो इधर 1, 2, 3, 4. A plus 4 मतलब क्या है? इधर आएगा. Whole star करे तो 5. So this entire okay expression value from here to here, okay, this value is what? 5. So if you solve this, 5 plus 3, 5 plus 3 is 8, 8 minus 5. देखो 5 plus 3 minus 5. So indirectly, so okay, this value is what? 3. Okay, so that is the answer. Remember, this question is the very simple and a very good question based on the 1D array. Okay, question is very much doable. Okay, if you are very clear with the 1D array internal concepts. Is that clear? How 1D array will be allocated and how the okay pointer will jump. What happens if we increment the pointer? If the concepts are clear, the question is very much doable. Okay, right? Not very tough. And initially, like many people given wrong answer. Somebody given 50% wrong answer. Somebody said 5. Somebody said 6. So just right. So but in 64-bit it should be 4 bytes now. Saurav, okay, where element size is 4 bytes or element size is 2 bytes, element size is 8 bytes, it will not make any effect. I am assuming that, okay, here integer is 2 bytes. Even if you take integer is 4 bytes, that will give the same answer. That will give the same answer. Your friend is saying that if the integer is 4 bytes, value will change. No. Okay, it will not change. If integer is 8 bytes, no, it will not change. The answer remains same. Is that clear for everyone? Just give me the comment. Is it clear for everyone? Okay, sir, how you did 12 divided by 2? Okay, right. See, remember motivation now. Okay, so I think your friend is saying one element 2 byte है, इसलिए 2 से divide करना पड़ेगा. See, why I am dividing 12 by 2? This concept you should know. Okay, subtraction between the two pointers कैसे होगा? Subtraction between two pointer करे तो क्या होगा? कैसे होगा? Okay, उसका मतलब क्या है? पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. ओके, राइट. ये दोनों पॉइंटर को सब्ट्रैक्ट करें तो ये 12 आएगा. 12 by 2 क्यों किया? बिकॉज साइज ऑफ द एलिमेंट से डिवाइड करना पड़ेगा. सो साइज ऑफ द एलिमेंट मैंने अज्यूम किया 2 बाइट्स. साइज ऑफ द एलिमेंट मैंने अज्यूम किया 2 बाइट्स, इसलिए 2 से डिवाइड किया. इज दिस क्लियर फॉर यू? इज दिस क्लियर? ओके, राइट. ओके, फाइन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द very good question. Okay, that is the based on the 2D array and tricky question है. तो सब लोग स्माइल करो, पेशेंस के साथ में सॉल्व करो. इज दैट क्लियर? राइट. वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन. आई एम सेइंग लाइक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली एक्सपेक्टेड. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 2D array. मैं थोड़ा आपको प्रिपेयर कर रहा हूं. पेशेंस के साथ में सॉल्व करो, पेपर पेन रेडी रखो, हरी बरी मत करो. ओके, बिकॉज accuracy is important. First attempt giving the right answer will give you a lot of confidence. First attempt, in the first attempt if you are giving the right answer, that will definitely give the okay lot of confidence. So smile के साथ रेडी है सब लोग? राइट. ओके, सो एक्सेलेंट है. पेशेंस के साथ क्वेश्चन को अच्छे से समझो, पेपर में लिखो, जो आपको लिखना है पेपर में लिखो, अच्छे से सॉल्व करो. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. ओके, राइट. वेरी गुड क्वेश्चन on the screen for you. On the screen for you. एक्सेलेंट. स्माइल कर रहे हैं सब लोग. अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को. 2D अरे इंटरनल कॉन्सेप्ट पूरा मालूम होना चाहिए. वेरी गुड क्वेश्चन. जैसे थोड़ा रफ डायग्राम बनाना है तो बना लो. सिर्फ 4 लाइन का प्रोग्राम है.
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। I mean, they should ask this kind of question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. You can solve the question if your concepts are very very clear with respect to 2D array internal mechanism. मैं थोड़ा साइलेंस भी रहता हूं, आपको डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो आप लोग वॉल्यूम कम करो। पेशेंस के साथ सोच के सॉल्व करो, पेशेंस रखो, रफ डायग्राम बना लो। पेशेंस के साथ सॉल्व करो, जस्ट रफ डायग्राम बना के। पेशेंस रिक्वायर्ड, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन आई सेड। Everyone should solve that. पेपर पेन लेके सबको सॉल्व करना है। ऑलमोस्ट 40 people are in the live.
Okay, not getting, sir. Please explain the question. Yeah, Samruddhi, I will explain. Don't worry. समृद्धि ट्राई करते रहो, जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ट्राई करते रहो. Okay, so last 1 minute I will wait, because we cannot wait more than this time. Last 1 or 2 minutes. टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन? समृद्धि ट्राई करते रहो. हाँ, टफ लग रहा है. कुछ क्वेश्चन टफ तो रहेगा ही रहेगा ऑब्वियसली. Abhishek, what is your question? What you are asking? PR4 whole star. Okay. No, that is not invalid. That is valid. Okay, I have executed the question 2 times, 3 times. I have executed the question before bringing in front of you. मैं आपके सामने लाने से पहले मैं 2-3 बार एग्जीक्यूट करके चला के डबल चेक किया है. ओके, ताकि क्वेश्चन में कुछ गलती ना हो. राइट. Yes, sir. Your friend is saying very interesting question, sir. Yes. Okay. ऐसा प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन तो आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हो. मैं बोला 4 लाइन का क्वेश्चन यहाँ पे चला के भी देख सकते हो. राइट. Right. So time up, guys. Time up. Okay. So how do you read this? Okay. How do you read this? Okay. So I'm telling, if you are my student, okay, if you are a MedDG student, I clearly explain everything. Okay, right? So how to read this? ये read करना तो मैं clearly बताता हूँ. Okay, पहले इसको पढ़ना होगा. P is a pointer to the 1D array of size 4 elements. Every element in that array is what? Integer. Okay, right. So you are having the 2D array 3 into 4. Okay, like this. Okay, I'm writing here 1, 2, 3, 4. So this is the 0th 1D array. Next, first 1D array, that is the 5, 6, 7, 8. Okay, next one is what? Okay, next one is the 9, 10, 11, 12. Okay, so this is the 0th 1D array. This is the first 1D array. First 1D array. This is the second 1D array. Okay, right. So ये clear है. Next, array name without subscript will point to what? In the 2-dimensional array. What is the concept you study? In the 2D array, in the 2-dimensional array, array name without subscript will contain the base address of 0th 1D array. Base address of 0th 1D array. Correct? So it means, okay, ARR, okay, this is also pointing to what? 0th 1D array. And the same thing is you are assigning to P here. So P is also pointing to exactly same thing. Okay, ये वाला clear है सबको? ये clear है? या रफ डायग्राम से थोड़ा इजी होगा. ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? समृद्धि यहां तक क्लियर है? ओके, राइट. ये वाला क्लियर है ना? राइट.
So P is also pointing to 0th 1D array. A is also pointing to 0th 1D array. A clear है, right? Next. Now int star q किसको point कर रहा है? Let's try to understand. P plus 2 whole star plus 1. Okay. P plus 2 करे तो क्या होगा? P is pointing to 0th 1D array. वो 0th 1D array को point कर रहा है. If I say plus 1, it will jump according to 1D array size. If I say plus 2, okay, same manner, okay. You should know pointer arithmetic concept clearly. What is the important line you follow? Whenever you increment a pointer, it will increment with respect to the size of the element to which it is pointing to. वो जिसको point कर रहे उसी size के हिसाब से increment होगा, correct? So now understand here. P plus 2 करेंगे तो क्या होगा? P is pointing to this. P plus 1 करे तो इधर आएगा. P plus 2 करे तो इधर आएगा. Okay? See, I am writing here P plus 2 is going to point to this one. Star लगाएंगे तो क्या होगा? Star लगाएंगे तो it is going to point to the element. Is that clear? See, I am writing here P plus 2, okay, करे तो क्या होगा? ये सेकंड 1D array को पॉइंट करेगा. अभी स्टार लगाने से किसको पॉइंट करेगा? एलिमेंट को पॉइंट करेगा. क्लियर? स्टार लगाए तो एलिमेंट को पॉइंट करेगा. सो P plus 2 होल P plus 2 मतलब इसको पॉइंट करेगा. होल स्टार लगाया तो एलिमेंट पे पहुंचेगा. इज दैट क्लियर? सो प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? प्लस 1 करेंगे तो इट इज गोइंग टू पॉइंट टू व्हाट? 10. इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब नाउ Q इज पॉइंटिंग टू व्हाट? दिस पर्टिकुलर एलिमेंट. ओके, ये 10 को पॉइंट कर रहा है. ओके, एड्रेस ऑफ 10 को पॉइंट कर रहा है. सो अंडरस्टैंड हियर Q इज पॉइंटिंग टू दिस वन. यहां तक क्लियर है? ये दोनों लाइन एक्सप्लेन किया वेरी डिटेल में. Q इज पॉइंटिंग टू 10. इज दिस वन इज क्लियर फॉर एवरीवन? समृद्धि समझ में आया बेटा? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? राइट. हाँ, अब बताओ. अभी एक एक का ओके, अभी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं अपन ना. राइट, एक्सप्रेशन का ओके, आप एरो मार्क्स देख लो. राइट, राइट. सो ब्रैकेट कहां से कहां तक है? सो दिस एरो इज गोइंग टू मैच विद दिस एरो. ओके, राइट. सो लास्ट एरो जो है ना, लास्ट ब्रैकेट जो है प्रिंटफ का है. ओके, ये क्लियर है? थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए क्लियरली लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. राइट, ये यहां तक, यहां से यहां तक है और ये यहां से यहां तक है. ये क्लियर है? देख लो. इफ आई डू मिस्टेक रेक्टिफाई मी ऑल्सो. राइट, दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर एंड दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर. एक बार देख लो. दिस इज क्लियर? एरो मार्क जो लगाया, लास्ट एरो लास्ट ब्रैकेट जो है, लास्ट ब्रैकेट इज फॉर व्हाट? प्रिंटफ का है वो. इज दैट क्लियर? यहां तक तो क्लियर है? मैं जो लाइंस लिखा ये क्लियर है? राइट. आप किसी को भी करो चलेगा. राइट, आप किसी को भी करो चलेगा. ओके, राइट. लेट्स फिनिश अप दिस वन. इसको करना है, जिसको करो. Q minus 1 होल स्टार बताओ. Q minus 1, Q is pointing to what? 10. मतलब ये 10 का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है. Q is pointing this one. Q minus 1 करेंगे तो क्या होगा? 9 का एड्रेस को पॉइंट करेगा. 9 का एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, स्टार लगाया तो वैल्यू एट द लोकेशन ऑफ दिस वन मतलब 9. तो इनडायरेक्टली ये क्या है? 9 mod 2. 9 mod 2 क्या है बताओ? 1. क्लियर है ना? सो ये पूरा वैल्यू यहां से यहां तक जो है, ओके, राइट. सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. ओके, दिस फॉर क्लैरिटी. ओके, यहां से यहां तक जो है इसका पूरा वैल्यू क्या है बताओ? 1 है. ओके, 9 हो गया, इसका वैल्यू 9 हो गया. 9 mod 2 कितना हो गया? 1 हो गया. इज दैट क्लियर? तो इसका वैल्यू पूरा भी 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है बताओ? इनडायरेक्टली ओके, P प्लस 1 होगा. P प्लस 1. अब बताओ P प्लस 1 होगा ये वैल्यू. ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? P प्लस 1 होल स्टार. अब बताओ P प्लस 1 होल स्टार मतलब क्या होगा? P प्लस 1 हो गया होल स्टार. अब बताओ P प्लस 1 मतलब क्या होगा? P इज पॉइंटेड टू दिस वन. P प्लस 1 क्या होगा? P प्लस 1 करे तो क्या होगा? फर्स्ट 1D array को पॉइंट करेगा. इज दैट क्लियर? P प्लस 1 फर्स्ट 1D array को पॉइंट करेगा. P प्लस 1 होल स्टार लगाएंगे तो ये वाला एड्रेस को पॉइंट करेगा. ये वाला एड्रेस को पॉइंट करेगा. तो फिफ्थ एलिमेंट का एड्रेस को पॉइंट करेगा. ओके, यहां पे लिख रहा हूं फिफ्थ. ओके, मतलब वैल्यू फिफ्थ है ना. ओके, फिफ्थ का, ओके, फिफ्थ 5 का. ओके, फिफ्थ लिखे तो डाउट हो जाएगा. 5 का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है. 5 का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है. ये क्लियर है? कर रहा है. ओके, राइट. ओके, ये क्लियर है? हाँ, राइट.
सो 5 का एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, ओके, p प्लस 1 होल स्टार लगाए तो ठीक है। हाँ ये क्लियर है। उसके बाद में देखेंगे अभी अपन बाद में, इधर आ जाओ, p प्लस 2 होल स्टार करो, क्या होगा, p प्लस 2 होल स्टार, p प्लस 2 होल स्टार यहां पे क्लियरली है, देखो p प्लस 2 करे तो इधर होगा p प्लस 2 होल स्टार, p प्लस 2 होल स्टार मतलब ये 9 का एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, ये क्लियर है, राइट। अब बताओ q माइनस, ओके ये वाला कर रहा है, q किसको पॉइंट कर रहा है बताओ, इसको पॉइंट कर रहा है, ओके, q माइनस इसका एड्रेस, q में इसका एड्रेस है 10 का एड्रेस है, 10 का एड्रेस को 9 का एड्रेस से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ओनली वन एलिमेंट का ही डिफरेंस है, तो इसका पूरा वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, इसका पूरा वैल्यू 1 होगा, राइट। सो मैं पूरा अच्छे से लिख रहा हूं, ओके देखो ब्रैकेट से लिख रहा हूं, इसका पूरा वैल्यू 1 है, ओके देखो ये 1 प्लस 1 हो गया, देखो ये 1 प्लस 1 हो गया, तो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है बताओ, 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया, ये क्लियर है, राइट। अब बताओ ये देखो क्या हो रहा है, ये p प्लस 1 होल स्टार मतलब ये पूरा किसको पॉइंट कर रहा था, 5 का एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, ओके 5 का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, 5 का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, प्लस 2 किया अपन, इधर लिया 5 का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, प्लस 2 किया, 5 का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, प्लस 1 करे तो 6 था, प्लस 2 करे तो 7, ओके 7 का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, देखो ये पूरा वैल्यू जो है, ये पूरा वैल्यू जो है 7 का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, इधर क्लियर, 7 का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो 7 का एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, फाइनली स्टार लगाया। अब बताओ वैल्यू एट द लोकेशन, ओके दैट व्हाट इज दैट 7, सो व्हाट इज द आंसर हियर, 7 इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछना सही है, ओके वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स 100% crystal clear concept of the 2D array and your patience, okay your imagination, okay आप रफ डायग्राम बना के प्रॉपर इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन चाहिए, so then only you will solve this question। ये क्वेश्चन को आप 2 to 3 मिनट्स में आप कर रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ओके सो आई से लाइक दिस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज आल्सो सॉल्विंग, ओके आई टुक टाइम, मैंने थोड़ा पास लेके किया मैं भी, ओके राइट, थोड़ा अच्छे से चेक करते हुए, ओके राइट पूरा इसको चला के भी देखा, मैं 2-3 बार चला के देखा, इज दैट क्लियर, राइट। सो 7 इज द राइट आंसर। किसी को कुछ भी डाउट है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट 4 लाइन है, आप चला के भी देख सकते हो, सिर्फ 4 लाइन का प्रोग्राम है, ओके फाइन। इज दिस क्लियर? समृद्धि समझ में आया बेटा? अभी समझ में आया? बताओ समृद्धि, इज दिस क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आंसर इज 7। ओके वेरी गुड। सो दोज हु हैव डन द मिस्टेक, जो लोगों को डिफिकल्ट लग रहा था, जो लोगों को डिफिकल्ट लग रहा था, चेक करो कहां पे आप लोग गलत कर रहे थे, कहां पे आपको ओके डिफिकल्ट लग रहा था, सो रेक्टिफाई योर कॉन्सेप्ट, इज दैट क्लियर, राइट। सी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज लाने का मतलब ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप लोग सुनते जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको रेक्टिफाई करना है, आप लोग का मिस्टेक कहां पे हो रहा है, ओके राइट। 2D अरे का जनरली हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस करते, आप लोग कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं, क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा रेक्टिफाई करो, थोड़ा इंप्रूवाइज करो योर कॉन्सेप्ट्स को, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन, राइट। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन हुआ नहीं हुआ तो टेंशन मत लो, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन यू हैव टू लर्न, नो इमोशंस ऑन द क्वेश्चन, नो इमोशंस ऑन द क्वेश्चन। अच्छा हुआ क्वेश्चन, सही हुआ, वेरी गुड, नहीं हुआ, वेरी गुड, ओके राइट। No tension on any question, just maintain the balanced mind, balanced attitude, balanced behavior, okay. So move on to the next question, be ready with the paper pen. Next question is also based on the calculation, it's a calculation, not very concept, oh sorry, it's very simple question only. Yeah, this is a simple question, simple concept. Maintain the balanced mind. This is a very simple question. Two D array on the strings.
take time. Remember, always giving the right answer in the first attempt important. एक्यूरेसी पे ध्यान दो. 1-2 मिनट्स टाइम लेने से कोई गड़बड़ नहीं है. टेक 1-2 मिनट्स टाइम लेने से कोई गलती नहीं है. 1-2 मिनट्स टाइम ले लो. फर्स्ट अटेम्प्ट राइट आंसर देना इंपॉर्टेंट है. 2-dimensional array, simple strings, 2D array on the strings. Two D array on the strings. Carefully read the question, understand the question. Take time. स्माइल करते हुए अच्छे से सॉल्व करो. साइंस मैथ क्या हुआ आंसर? संदीप पाल, आराम से करो, नो प्रॉब्लम. ओके, नो प्रॉब्लम. Requesting everyone to give the answers. ओके, धीरज है तुम्हारा नाम, ठीक है. एक्चुअली यू हैव केप्ट साइंस मैथ्स पूरा ऐसा लगा है ना एडी में, इसको देख के मेरे को लगा, सो इट्स ओके. Last 1 minute, it will not take this much time. Last 1 minute, requesting everyone to participate. Everyone must give the answer. Okay.
Okay. So time up guys. Okay. Almost 50% wrong answer, 50% right answer. Okay. Okay. Let's try to draw the diagram. So how the diagram will look like? So just rough diagram मैं बना रहा हूँ आपको, right? So here is a S. Okay. You are having two dimensional array, right? Two 1D arrays. Okay. M, A, D, E. Okay. So remaining all will be what? Null रहेगा. Okay. जो भी है. So this is the 0th 1D array. Okay. This is the first 1D array. Diagram ऐसे ही रहेगा. Right? E, A, S, Y. Every 1D array is having size of what? 6. 0, 1, 2, 3, 4, okay, 5. So 0, 1, 2, 3, okay, 5 tak rahega. Okay, correct. Now let us say this address is what? 100, okay, 101, 102, 103, 104, 105, this is 106, 107. So like this. Every element is the one byte because the character, I am assuming it's 1 byte. Okay, fine. Now come back to this percentage s. Percentage s used to print string. Percentage s is used to print the string. और percentage s को क्या देना चाहिए? Base address देना चाहिए. Correct? Percentage s को क्या देना चाहिए? Base address. So from the base address provided, it will print all the characters until the null character. From the base address provided, it will print all the characters until the null character. Okay, right. So now understand here, s plus 0 whole star. अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज s को बेस एड्रेस देना चाहिए. जो बेस एड्रेस आप दोगे, फ्रॉम द बेस एड्रेस प्रोवाइडेड, इट विल प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स until the null character. Correct? So now s plus 0. Now tell me, s means what? S means it is going to point to what? 0th 1D array. Okay. 2D array है ना, 2D array में s means what? It is going to point to 0th 1D array. Right. अब बताओ s plus 0. S plus 0 मतलब s ही रहेगा. Okay. S means it is pointing to this star s. Indirectly इसका मतलब क्या है बताओ? Star s. Indirectly इसका मतलब star s है because s को plus 0 करे तो s ही रहेगा. तो star s करेंगे तो it is going to point to what? 0th element address. Okay, 0th element address. तो मतलब what is the base address you are giving? 100. Remember the first यहाँ पे base address आप 100 दे रहे हैं. तो 100 दिए तो क्या होगा? From the base address 100, it will provide all the characters until the null character. तो मतलब पूरा क्या प्रिंट करेगा? मेड प्रिंट करेगा. तो फर्स्ट यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? MEAD, मेड प्रिंट करेगा. इज दैट क्लियर? और नेक्स्ट s प्लस 1 करेंगे तो क्या होगा? s is pointing to this. s प्लस 1 करे तो क्या होगा? It is going to point to what? First 1D array. तो यानी 106. तो यहाँ पे आप क्या दे रहे हैं? बेस एड्रेस 106 दे रहे हैं. तो फ्रॉम द बेस एड्रेस, ओके, इट विल प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स अंटिल द नल कैरेक्टर. तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? इजी प्रिंट होगा. ओके, राइट आंसर इज व्हाट? ए इज द राइट आंसर. इज दैट क्लियर? यहाँ पे बहुत लोग ऑप्शन बी बोला, सी बोला, डिफरेंट आंसर बोला. राइट देखो परसेंटेज एस को, आपका डाउट मैं बता रहा हूं, सुनो इधर. परसेंटेज एस को आप वो एलिमेंट का एड्रेस दे रहे हैं या तो 1D अरे का एड्रेस दे रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है. परसेंटेज एस को जब आप बेस एड्रेस दे रहे हैं, वो बेस एड्रेस यहां पे वो एलिमेंट का एड्रेस था, यहां पे वो 1D अरे का एलिमेंट एड्रेस था. इज दैट क्लियर? तो एलिमेंट का एड्रेस दे रहे हैं, 1D अरे का एड्रेस दे रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है. रिमेंबर परसेंटेज एस क्या करेगा? फ्रॉम द बेस एड्रेस प्रोवाइडेड, वॉट एवर द एड्रेस यू गिव फ्रॉम द बेस एड्रेस प्रोवाइडेड, इट विल प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स अंटिल द नल कैरेक्टर. दैट्स इट. वो एलिमेंट का बेस एड्रेस है, 1D अरे का एड्रेस है, उससे कोई लेना देना नहीं है. इज दैट क्लियर? सो राइट आंसर इज व्हाट? ए. इज दैट क्लियर? सो ये सब रॉन्ग आंसर है. राइट आंसर इज ए. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? Many people are given the wrong answer. Almost 50% given the wrong answer. Okay, right? Yeah, धीरज, clear है सबको? Yeah, motivation, okay, all the time. Clear है सबको? स्टार है तो मैं बताया वही, स्टार है तो भी ओके, उससे कोई लेना देना नहीं है. आप एलिमेंट का बेस एड्रेस दे रहे हैं, 1D अरे का बेस एड्रेस दे रहे हैं. ओके, इट इज नॉट हैविंग एनी सिग्निफिकेंस. परसेंटेज एस को बस बेस एड्रेस चाहिए. जो बेस एड्रेस आप देंगे, राइट, फ्रॉम दैट बेस एड्रेस इट विल प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स अंटिल द नल कैरेक्टर. ओके, दैट इज द बिहेवियर. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन?
Okay, right. Okay, right. Clear for everyone? Right. Very good evening, Krishna. Right. So move on to the next question. Next question is the, okay, again the simple and good question. Remember, accuracy matters. Accuracy matters. Your concept should be very clear. Concept should be very clear. Next question on the screen. कौशल गलत हो गया? It's okay, no problem. मुझे मालूम था आप लोग ऐसे ही सोचेंगे, स्टार लगाए तो कुछ अलग सोचेंगे. Okay. This question is simple. Okay, it will not take this much time. I think actually this kind of question is there in the PYQ also. In case if you solve the PYQs, the slightly modified version. Okay, right. Last 1 minute. See, remember, making the proper diagram is important. Making the proper diagram is important. You should have a crystal clear concepts. Then only you can solve the questions in the pointers. Pointers is very, very simple. Remember, if your concepts are crystal clear.
Okay, so excellent. So everyone given the right answer. So that is the B. B is the right answer. So if you want, I will show you the diagram. Okay, clearly. Okay, how you are going to draw this diagram? How you are going to draw this diagram? Remember, you don't just like that. Okay, don't read the pointers. The concept must be clear. The first, इसका डायग्राम कैसे रहेगा वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, क्वेश्चन इज वेरी इजी इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. ओके, सो इसका डायग्राम कैसे रहेगा? ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सी दिस हियर. ओके, इसका डायग्राम ऐसा रहेगा. ओके, DBMS. ओके, यहाँ पे नल कैरेक्टर है, राइट. इसका एड्रेस समझो 100 है, 101 102 ऐसा कुछ होगा. और नेक्स्ट S1 में इसका एड्रेस, फर्स्ट कैरेक्टर का एड्रेस होगा 100. इट इज पॉइंटिंग टू दिस. सो 0 1 2 3 लाइक दिस ऐसा होगा. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ S1. अभी इसका भी कुछ एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल 200. ओके, नेक्स्ट यू आर हैविंग द नेक्स्ट स्ट्रिंग, अनदर स्ट्रिंग OS. ओके, OS and next null character here. नेक्स्ट इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल 300 है, 301 302 ऐसा कुछ होगा. सो 012 लाइक दिस. और नेक्स्ट S2 में क्या रहेगा बताओ? 300 रहेगा. ओके, इसका एड्रेस फॉर एग्जांपल S2 का भी कुछ एड्रेस है. ओके, 400. ओके, दैट इज द डायग्राम. फर्स्ट ये दोनों का डायग्राम ऐसा होगा. देखो F2 में आप क्या पास कर रहे हैं बताओ? एड्रेस ऑफ S1, एड्रेस ऑफ S2. एड्रेस ऑफ S1 का एड्रेस क्या है? 200. S2 का एड्रेस क्या है? 400. ओके, ये पास किया, किस में पास किया बताओ? P एंड Q में. देखो यहाँ पे S1 ऑलरेडी पॉइंटर है, पॉइंटर का एड्रेस अगर आप पास कर रहे हैं, रिसीवर शुड बी व्हाट? डबल पॉइंटर. ये क्लियर होना चाहिए. द फर्स्ट स्टेप, when you are passing address of a pointer, receiver should be double pointer. Okay, very clear. P and Q में पास किया आपने. Okay, देखो P में पास किया 200. Okay, this point pointing to this. और Q में पास किया 400 and this is pointing to this. So that is the diagram. Next, अब बताओ next. Okay, when I come to here, okay, character star T. Okay, T is just a pointer variable. Okay, T में क्या रखते देखते हैं अभी. T इक्वल टू स्टार पी राइट साइड का पहले इवैल्यूएट करो. स्टार P is 200. स्टार P वैल्यू एट द लोकेशन 200 100. ओके, देखो 100. ओके, T में स्टोर किया, 100 T में स्टोर किया. ओके, क्लियर. अब बताओ नेक्स्ट, राइट साइड का पहले बताओ. स्टार Q मींस व्हाट? 400. स्टार Q वैल्यू एट द लोकेशन 400, दैट इज 300. सो दिस इज 300. ये 300 किस में स्टोर करना? स्टार P में. तो P मतलब क्या है बताओ? 200. स्टार P मतलब 100. तो ये 100 को चेंज करना किससे? 300 से. जब यहां पे 300 आपने रख दिया, देखो ये पॉइंटर डिस्कनेक्ट होगा और दिस इज स्टार्टेड पॉइंटिंग टू दिस वन, राइट. ओके, डायग्राम ऐसा हो गया. और नेक्स्ट स्टार Q में क्या रखना? T. अब बताओ T में 100 है, स्टार Q मींस 400. ओके, वैल्यू एट द लोकेशन 400 300. यहां पे क्या रखना है बताओ? 100. So when you are storing 100 here, this pointer is disconnected. Now this is now pointing to what? 100. Is that clear? Right? So मैं यहाँ पे clearly लिख दे रहा हूँ, right? This is pointing to this one. Okay? देखो अभी क्या हो रहा है? Next, I am printing S1, S2 परसेंटेज S को दे रहा हूँ. S1 में क्या है बताओ? 300. S2 में क्या है बताओ? 100. ओके, तो पहले 300 पास कर रहे हैं बेस एड्रेस, 300 प्रिंट होगा, यानी पहले OS प्रिंट होगा. उसके बाद 100 पास कर रहे हैं, 100 में क्या है बताओ? ओके, DBMS. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट DBMS प्रिंट होगा. सो दिस इज द आउटपुट. राइट आंसर इज B. B इज द राइट आंसर. इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? आई हैव एक्सप्लेन्ड विद अ वेरी क्लियर डायग्राम. क्लियर डायग्राम से बताया, बिकॉज कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, डायग्राम आप कैसे बना रहे हैं इसका, ओके, उसको कैसे पढ़ रहे, पढ़ने का तरीका इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है. Okay, as I said, it's very simple. Pointers are very easy if your concepts are clear. Okay. Remember, Vidhi Jain, we are not modifying the data. Remember, वहां पे addresses okay change कर रहे हैं अपन, data modify नहीं कर रहे हैं. Vidhi Jain. ओके, ठीक है. ओके, फाइन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना. डू नॉट वेस्ट द टाइम. ओके, बी रेडी विद द पेपर एंड पेन. कॉन्सेंट्रेट ऑन द एक्यूरेसी पार्ट.
First attempt right answer then important. This is based on the lower triangular matrix. कृष्णा ओके यू आर सेइंग मेरे जी सीएससी का बैच लेने पर बुक्स पैकेज मिलेगा CSL4 वाला बैच में. कृष्णा you need to talk to the concerned people. You can call them. The question is based on the calculation. Make sure your calculations are correct. Requesting everyone to solve. जो लोग लाइव में है टाइम वेस्ट मत करो. Try to give the comment. लाइव में सॉल्व करो. Yes, Dheeraj. We have a GTQ series for every subject. Subscribe to Mediji channel so you'll get everything. Dheeraj, we have a complete series of GTQ for all the subjects.
Okay. Everyone must give the answers and practice. Come on guys, give the answers. Take the proper data. I have given simple question only. Generally, I will solve with the bigger values. Okay, if you are my classroom student, in the classroom, we will solve with the bigger data. Generally, in the classroom, we will solve with a very bigger data. Almost 7-digit, 8-digit answer will come. Yes or no? In the class, you will get around 7-digit, 8-digit answer. Very big calculation. This is a simple one. Okay. Very less people are answering. Mallikarjun Reddy, just verify your answer. Okay. So fine. Time up guys. Let's try to solve that. So it's asking to find location of A of 16. Okay. Comma 9. Correct. So base address of the array is 500. Okay. Now tell me which row you need to go. You need to go to the 16th row. So it means how many rows you have to cross? 16 minus 0. Okay. Because starting with the 0 to 39, 0 to 39. 16 minus 0 rows. This many rows you have to cross. And every row is having how many elements? Okay. First row is having only one element. Second row is having two elements. Third row is having three elements. That is n into n plus 1 divided by 2. So if you consider this is n, so that is n into n plus 1 divided by 2. Okay. This is about the rows. Correct. Okay. This is 1 here. Okay. Next plus column. कौन सा column पे जाना चाह रहा है? 9. So that is 9 minus 0 columns you have to cross and multiply everything with what? Size of the element. Size of the element. Size of the element is 8 bytes. He has given. So you just make this calculation 500 plus okay 16 multiply with 17 divided by 2 plus 9. Okay, multiply everything with the 8. Okay, right? So make the calculation. Right? So it's a row measure order only, right? Very, very simple. Row measure order, lower triangular matrix. So 166, okay, 0. Right? 1660 is the calculation. Okay. Many people given the right answer. So that is correct. Yes, Abhishek, right answer. 1660 is the right answer. Very less people are giving the answers. Okay, actively you must participate. If you are active, okay, like we can bring up more series like this. Okay, right. थोड़ा टफ क्वेश्चन हो गया क्या? बहुत सारे टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं. प्रीवियस वाला भी थोड़ा टफ, प्रीवियस वाला भी टफ, ऐसा लग रहा है क्या? राइट. Okay, easy to moderate. All variety of the questions are there. Okay, some questions are tough, some questions are easy, moderate. All variety, mixture of all variety of the questions. Chalo, let's take the next question is easy. Next question is easy. Okay, move on to the next question. Very easy question. Just a 1-minute question. Everyone should give the right answer. Oh, motivation. Okay, you have not understood. Yeah, Kaushal Gupta. Okay, maza aa gaya tha. Okay, very good. Motivation. Okay, why you have not understood? It means your concepts are not clear. Lower triangular matrix, row measure order. तुमको concept अगर मालूम है, then only you will solve. चलो easy question है.
बीच में इजी क्वेश्चन लाया मैंने। देखो मैंने बोला इजी क्वेश्चन लाया बीच में इजी क्वेश्चन लाया आपको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके थोड़ा जस्ट रिलैक्स करने के लिए इजी क्वेश्चन लाया। रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, ओके, बिकॉज द एंटायर पेपर इज नॉट द टफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज मिक्सचर ऑफ ऑल वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस। they want to test your okay conceptual skills. Everyone should comment. Almost 45 people are there in the live. Very less comments are coming. Okay, right. So time up. It will not take maximum 1-2 minutes question only, right? So it will not take more than this time. But remember, it's very unfortunate. Okay, 50% people given the wrong answer. Okay, right? मैंने ये क्वेश्चन सिंपल थोड़ा बीच में थोड़ा बच्चे रिलैक्स हो जाएंगे बोल के क्वेश्चन को लाया। सच में मेरा प्लान नहीं था ये क्वेश्चन लाने के लिए। ओके राइट, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे बच्चे बोल के लाया था, बट 50% गिवन द रॉन्ग आंसर। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। इंटीजर x इक्वल टू 60। नाउ टेल मी x का वैल्यू क्या होगा? इनिशियली 60। ठीक है, फर्स्ट देखो ये x प्लस प्लस है, ओके राइट, पोस्ट इंक्रीमेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट का फर्क तभी होगा अगर आप किसी को असाइन कर रहे हैं, अगर आप कोई फंक्शन में पास कर रहे हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट का प्री इंक्रीमेंट का फर्क तभी होगा अगर आप वो किसी को असाइन कर रहे हैं, या तो कोई फंक्शन में आप पास कर रहे हैं या तो आप कोई प्रिंट कर रहे हैं, तभी फर्क होगा। अदरवाइज देर इज नो इफेक्ट। ओके, तो x प्लस प्लस मतलब x को इंक्रीमेंट करो तो ये क्या हो जाएगा? 61 होगा। और नेक्स्ट प्लस प्लस x करो, प्री इंक्रीमेंट है उसे भी कोई मतलब नहीं है, राइट? तो x को इंक्रीमेंट करो, x को इंक्रीमेंट करो तो क्या होगा? 62 होगा, राइट? अब बताओ नेक्स्ट, ये x प्लस 1 है, x प्लस 1 है तो इसका मतलब क्या है? सीधी सी है, 62 प्लस 1 करे तो ये क्या होगा बताओ? 63 होगा। बट रिमेंबर यहां पे कोई असाइनमेंट नहीं है, x का वैल्यू चेंज नहीं होगा, x वैल्यू चेंज नहीं होगा, x वैल्यू चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? राइट, देखो यहां पे कोई असाइनमेंट नहीं है। ये लाइन दिया तो भी अपना आंसर सेम है, ये लाइन नहीं दिया तो भी अपना आंसर सेम है। दैट लाइन इज नॉट क्रिएटिंग एनी डिफरेंस। दिस लाइन इज नॉट क्रिएटिंग एनी डिफरेंस बिकॉज यहां पे कोई असाइनमेंट नहीं है। देखो यहां पे x का वैल्यू कब चेंज होता था? x इक्वल टू x प्लस 1 होता, x इक्वल टू x प्लस 1 होता। अगर ऐसा होता तो यहां पे x वैल्यू चेंज होता था। अब रिमेंबर प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में असाइनमेंट है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में असाइनमेंट है, तो यहां पे कोई असाइनमेंट नहीं है तो ये लाइन से कोई फर्क होने वाला नहीं है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट, अब बताओ क्या होगा? x वैल्यू तो 62 है, ये लाइन से कोई लेना देना नहीं है, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बताओ 1 प्लस x प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है तो अभी लेना क्या है बताओ? 62। ओके देखो 1 प्लस 62 व्हाट इज द आंसर? 63 इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर?
ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, बाद में x का वैल्यू चेंज होगा, बाद में x का वैल्यू चेंज होगा, यहां पे 63 होगा, इधर क्लियर। मगर आउटपुट प्रिंट क्या होगा 63। ओके देखो 1 प्लस x प्लस प्लस, तो यहां पे x का वैल्यू 62 लेना है, 1 प्लस 62 दैट इज 63। Many people given 62, 64, 65. Okay, right? Is this clear for everyone? Yeah, Abhishek, excellent. Yes, Abhishek, yes, sir. Gate will always do this kind of things, sir. Yes, sir. Excellent. समझ में आया ना सबको? Many people given wrong answer. Okay, 64 भी दिया, कुछ लोग 62 भी दिया. Right? Right answer is what? 63. 63 is the right answer. So I'm writing here 63 is the answer. 63 is the answer. Is that clear for everyone? Right? See, remember if this kind of question comes, be careful. Okay, be careful. Okay, in the exam, okay, not only your concepts and logic, patience भी भर के रखना है तुमको. Okay, right? चलो, let's move on to the next question. Don't worry, गलत हुआ तो गलत हुआ. Don't worry, don't feel bad. Okay, don't feel bad. Okay, rectify तो कुछ तो समझ में आया. Okay, कुछ तो सीखने को मिला आपको. Right? Move on to the next question. Move on to the next question. Next question on the screen. This question is based on the recursion. Simple recursion है. Very easy question. Yeah, Dheeraj, that is fine, beta. Okay, if you are given the correct answer, that is very good. This is also very good question. Simple and very good question. Everyone should give the answer. Okay.
right? So you can comfortably solve this, okay, in 1 to 2 minutes, okay, 1-2 minutes is maximum sufficient for this question, okay, not very tough question, guys. अभी भी बहुत लोग नहीं दिया आंसर. Okay, so let's move on to the, okay, solution, okay, right? Now understand here, you keep solving. If anybody is still solving, you can keep solving that. So recursion है तो generally ऐसे you just use the numbering. If x equal to 0, return y. So this is the first statement. Okay, ये दोनों मिला के first statement मानो. Otherwise second statement return gate of x minus 2 comma x plus y. So देखो right, let's make the, okay, stack से करना है. recursion मतलब gate first time you are passing 12 comma 8. So देखो इनिशियल वैल्यूज यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, x इक्वल टू 12, y इक्वल टू 8. ये क्लियर है, राइट? x इक्वल टू x वैल्यू रिसीव किया, ओके, राइट, 12 एंड y रिसीव किया 8, ओके, फाइन. x इक्वल टू 0 है तो रिटर्न y, ओके, x इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स है, फॉल्स है. तो फॉल्स है तो रिकर्सिवली क्या कॉल कर रहे हैं बताओ, रिटर्न x माइनस 2 कामा x प्लस 5, ठीक है ना, राइट? So this is creating one more activation record. What you are passing in this next activation record, x minus 2 comma x plus 5. x minus 2 मतलब x value 10 रिसीव किया, y में x plus 5 मतलब 12 plus y, 12 plus 8, so that is the 20. Okay, next same thing, x equal to 0 तो return y, x equal to 0 false है. It is creating one more function called x minus 2, यानी x value 8 होगा, y value क्या होगा, देखो x minus 2, 10 minus 2 that is 8, x plus 5 यानी 10 plus 20, okay, that is the 30. Now x equal to 0 है तो okay रिटर्न करते थे y, अभी नहीं है तो it will create one more activation record. Okay, next time you are passing x equal to 6, y equal to 38. Next again it will create one more activation record, x equal to 4, y equal to 38 plus 6, 38 plus 6 कितना होगा, 44. It will get one more activation record. Next x equal to 2, y equal to 48. देखो 44 plus 4, 48. It will get one more activation record, x equal to 0, y equal to 50. Okay, and next okay, understand here. Now when you say x equal to 0, देखो x equal to 0 है तो return y. Now tell me what is the y value you are having, 50. 50 will be returned and that will return to the previous activation record, previous and finally okay, यहाँ पे ये पूरा वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, 50. 50 will be taken care by percentage d and 50 will be printed on the screen. 50 will be printed on the screen. Is that clear for everyone? So this is how you need to solve the problem. Just okay, 1 to 2 minutes question now. Okay, it is just a 1 to 2 minutes question now. You can do with the recursion tree, okay, right? The meaning is same only. या मीनिंग इज सेम ओनली. अगर आप रिकर्शन ट्री से बनाते या तो नॉर्मल स्टैक से बनाते तो मतलब सेम ही है. अपने को थोड़ा इजी होने के लिए कुछ लोग ट्री से करते, कुछ लोग स्टैक से करते. आप कैसे भी करो, इंटरनल मीनिंग इज व्हाट, अ स्टैक ओनली. इंटरनल मीनिंग इज व्हाट, अ स्टैक ओनली. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? समझ में तो आया सबको? एक बार कमेंट करो. दिस इज इजी. समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, राइट, excellent. Now understand here the next question is a very very good question. थोड़ा टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन लाया, राइट? 3D अरे पे, 3D अरे के ऊपर थोड़ा टफ क्वेश्चन है. जस्ट ओनली 3-4 लाइंस का प्रोग्राम है, ओनली 4 लाइंस का प्रोग्राम है. ओके, पेशेंस रखो सब लोग, पेपर पेन रेडी रखो, पेपर पेन रेडी रखो, पेशेंस रखो, राइट? ऑलमोस्ट 35-40 पीपल आर इन द लाइव. एवरीवन मस्ट ट्राई. स्माइल करो सब लोग, स्माइल करो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? मेंटेन पेशेंस एंड सॉल्व वेरी केयरफुली, केयरफुली सॉल्व करो. इज दैट क्लियर? So whenever I discuss this question, generally many people will give the wrong answers. Okay, मैं थोड़ा पहले ही बता रहा हूं आप केयरफुल रहने के लिए,
डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं. ओके राइट, इजी क्वेश्चन है राइट, मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है राइट. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, केयरफुली सॉल्व करो. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. चलो वेरी गुड. देखते कितने लोग सही करते. आई वॉन्ट टू सी द फर्स्ट अटेम्प्ट राइट आंसर. देखते कितने लोग सही करोगे, मजा आएगा इसमें. अगर ये क्वेश्चन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर देते हो, दैट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड. अगर ये क्वेश्चन अगर फर्स्ट अटेम्प्ट सही आंसर लाते हो, वेरी वेरी गुड. नॉट वेरी टफ क्वेश्चन, आई एम सेइंग नॉट वेरी टफ, moderate only you can say. Okay, make the rough diagram. Maintain patience, make the rough diagram. चलो धीरज डन. पहले करो, अच्छे से करो. Yeah, Naman Jain, wrong answer. Nobody given the right answer till now. Verify करो. Nobody given the right answer. Everybody wrong answer only. I told this is one of the very good question. सबका गलत आंसर है, दोबारा वेरीफाई करो. Okay, Vidhi Jain is saying error.
Just only 3 lines question. 1, 2, 3. The fourth statement is anyway printf. Fourth one is anyway printf. So 1, 2, 3. Only 3 lines question. चेक करो सब लोग, डबल वेरीफाई योर आंसर्स. सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन था. Okay, last 1-2 minutes. Only 3 lines program. Yeah, Dheeraj, anyway I will explain why you are worried. Last 1 minute I said. 1 मिनट सबर करो, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा. Okay, different people are giving different answers. Garvit Chaudhary, you are from Delhi offline batch, right? Okay. Rahul, what is the answer? Okay, chalo. Nice. Different people given. Yeah, you are a Jaipur offline batch. Okay, fine. So different people given the different answer. Okay, right. So some people given 50% right answers. Okay, 50% wrong answers. Okay. Can you guess what is the right answer? Just ये 3 लाइन है, 3 लाइन ही है, बस सीधा टाइप करके भी चला के देख सकते ऑनलाइन कंपाइलर में. सिर्फ 3 लाइन है, ऑनलाइन कंपाइलर में टाइप करके भी देख सकते. राइट, चलो ठीक है. So first of all, okay, this is the 3D array, that is clear, right? So 20 2D arrays, each 2D array is having okay, size of 30 into okay 40. Okay, so I write here 20 2D arrays, 20 2D arrays, okay, each of size
each of size 30 into 40. Okay, right. And total, how many 1D arrays are there? 30 1D arrays are there. Okay, 30 1D arrays, 30 1D arrays, each of size, okay, 40. Okay, each of size 40. Okay, just a rough idea. Okay, remember 30 1D arrays means ये total 30 1D array नहीं है, हर 20 2D arrays है, राइट, 20 2D array है, राइट, हर 2D array के अंदर 30 1D array है और हर 30 1D array का साइज क्या है बताओ, 40. ये क्लियर है ना, राइट, ये डिक्लेरेशन क्लियर है. 20 2D arrays है, टोटल 20 2D arrays है. ओके, हर 2D array का साइज 20 into 30 into 40 ऐसा बोल सकते. 20 2D arrays है और हर 2D array के अंदर 30 1D arrays है और 30 1D array का, हर 1D array का साइज ओके 40 एलिमेंट्स है. एवरीथिंग इज लाइक इनिशियलाइज विद द जीरो. ओके, डॉट एवर इट इज डज नॉट मैटर. ओके, फाइन. अब बताओ व्हाट इज दिस वन, इंटीजर x1 माई एम्परसेंट ये है माइनस एम्परसेंट ये है. इधर भी है. जनरली बहुत लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एम्परसेंट ये का मतलब क्या है, ओके, माइनस एम्परसेंट ये का मतलब क्या है, राइट. सो वो पूरा कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता सकता हूं, राइट. सो जनरली अगर आप मेरा स्टूडेंट है तो आपको क्लियरली मालूम होगा, राइट. सो माइनस एम्परसेंट ये प्लस एम्परसेंट ये कैंसिल होगा, तो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट, 2 ओनली. ओके, x1 का वैल्यू क्या है, 2 है. x1 का वैल्यू 2 है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पूरा लॉजिक मैजिक जो है ओके इसमें है. ओके, राइट, सॉरी. ओके, पूरा लॉजिक और मैजिक जो भी है ओके x2 में है, राइट. हाँ, सो इसका वैल्यू x1 का वैल्यू 2 है, माइनस एम्परसेंट ए प्लस एम्परसेंट ए कैंसिल. ओके, राइट, नॉर्मल. ओके, अर्थमेटिक है ना, राइट, अर्थमेटिक है, माइनस एम्परसेंट ए प्लस कैंसिल प्लस 2. ओके, 2 ओनली. ओके, x1 का वैल्यू क्या है, 2 है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, राइट. क्लियर फॉर एवरीवन, राइट. नेक्स्ट, अब बताओ नेक्स्ट इसका मतलब क्या है. ओके, इसका मतलब क्या है. ओके, सी दिस हियर, a ऑफ 19, इसका मतलब क्या है, a प्लस 19 होल स्टार. ओके, और नेक्स्ट a ऑफ 4, इसका मतलब क्या है, a प्लस 4 होल स्टार. क्लियर, राइट. अब देखो अभी ये किसको पॉइंट कर रहा है, तो पहले ये बताओ ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये किसको पॉइंट कर रहा है. ओके, दैट्स व्हाट द फर्स्ट स्टेप वी रिक्वायर. a ऑफ 19 a ऑफ 4 वो किसको पॉइंट कर रहा है, a प्लस 19 होल स्टार. क्लियर, राइट. अब बताओ 3D अरे में, पहले ये बताओ 3D अरे में अरे नेम विदाउट सबस्क्रिप्ट, अरे नेम विदाउट सबस्क्रिप्ट विल कंटेन बेस एड्रेस ऑफ व्हाट, 0th 2D array, 0th 2D array, correct. 3D array में, in the 3D array, a means array name without subscript will contain base address of 0th 2D array. देखो 0th 2D array को पॉइंट करेगा, a means 0th 2D array, 0th 2D array को पॉइंट कर रहे हैं. ओके, प्लस 19 किया तो किधर जंप करेगा, 19th 2D array, 19th 2D array को स्टार लगाया तो वो 1D array पे जंप करेगा, करेक्ट. 19th 2D array को कर रहा है, ओके, राइट. a प्लस 19 मतलब 19th 2D array, ठीक है. स्टार लगाए तो क्या होगा, अंदर जाएगा, 2D array को अंदर गए तो 1D array. तो ये पूरा ये जो है ये किसको पॉइंट कर रहा है, आई एम राइटिंग 19th 2D array, 19th 2D array के अंदर 0th 1D array को पॉइंट कर रहा है, 0th 1D array को पॉइंट कर रहा है. ये क्लियर है, 19th 2D array के अंदर 0th 1D array को पॉइंट कर रहा है. और नेक्स्ट a प्लस पर होल स्टार, सेम थिंग, a प्लस पर होल स्टार मतलब ये क्या होगा, 4th 2D array, 4th 2D array ओके अंदर 0th 1D array को पॉइंट कर रहा है. ये क्लियर है, राइट. इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ये दोनों का मतलब क्लियर हो गया, राइट. ये 19th 2D array को पॉइंट कर रहा है, 19th 2D array के अंदर ओके 0th 1D array को, ये 4th 2D array के अंदर 0th 1D array को पॉइंट कर रहा है. ये दोनों का मतलब समझ में आया, क्लियर. अब बताओ ये 19th 2D array का बात कर रहा है, ये 4th 2D array का बात कर रहा है. ओके, ये आप कितना 2D arrays था ओके सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ओके माइनस है ना, ये माइनस है,
हाउ मेनी 2D arrays you have to cross? कितना? ओके, सबट्रैक्ट करना चाह रहे 19th 2D array से 4th 2D array। 2D arrays की बात कर रहा हूं, पहले मैं 2D arrays की बात कर रहा हूं। तो अंडरस्टैंड हियर 19th 2D array से 4th 2D array। देखो 19 माइनस 4 मतलब 15 2D arrays है बीच में। बीच में कितना 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 2D arrays है? 15th 2D arrays है। 15 2D arrays है। 19th 2D arrays है 4th 2D array तक का। ओके राइट, रिमेंबर 15 2D arrays है। 15 2D array में हर 2D array का अंदर कितना 1D array है? 30 1D array। देखो हर 2D array के अंदर 30 1D array है। इज दैट क्लियर? राइट। सो देखो यहां पे 15 2D arrays को क्रॉस करना है, बीच में 15 2D arrays है and every 2D array is having what? 30 1D arrays। तो बीच में ओके इधर से इधर, इधर से इधर पूरा कितना 1D arrays है? ओके 15 into 30, 15 into 30 1D arrays है। प्लीज अंडरस्टैंड 15 into 30 1D arrays मतलब फिर व्हाट? 450 450 450 1D arrays है। 450 1D arrays बिकॉज दिस स्टार लगाया तो ये 1D array को ही पॉइंट कर रहा है, ये भी 1D array को पॉइंट कर रहा है, दोनों भी 1D array को पॉइंट कर रहे हैं। ओके बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम 1D arrays। सबट्रैक्शन इज अलाउड? यस अलाउड। both are pointing to 1D array, subtraction allowed? Yes। both are pointing to 2D array, subtraction allowed? Yes। यहां पे both are pointing to 1D array, subtraction allowed? Yes। ओके इसका इधर से इधर बीच में कितना 2D arrays है? कितना 2D arrays है? 15 2D array। हर एक 2D array के अंदर 30 1D array है। तो इसका मतलब पूरा कितना 1D array है? ओके 450 1D array है। तो इसका पूरा वैल्यू कितना है बताओ? 450। बस आपको क्या करना, क्या पूछ रहा है? 450 माइनस 2 448। दिस इज द राइट आंसर। 448, दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? Is this clear for everyone? The question is very good question. Very good question based on the 2D array, 3D array based on the 3D array. Very good question. देखो क्वेश्चन सिंपल, ओनली वन लाइन से पूरा मैजिक है, लॉजिक है। ओके ओनली वन लाइन है, ये तो सिंपल है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। बस क्वेश्चन, बस यही लॉजिक था इसमें। ओके ओके ओनली 3 लाइंस का प्रोग्राम है, 3 लाइंस का प्रोग्राम है और 50% रॉन्ग आंसर है। इज दैट क्लियर? थोड़ा प्रैक्टिस कहां पे जरूरत है, आप नोट डाउन करके प्रैक्टिस करो। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? अब किसी को भी कुछ भी डाउट है, किसी को भी कुछ भी डाउट है, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ 3 लाइन ही है। टाइप करो फटाफट, कॉपी पेस्ट मारो, टाइप करो, ऑनलाइन कंपेयर में चला के देखो। इज दैट क्लियर? राइट क्लियरली। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो समझ में नहीं आएगा। ओके मैं जो बताया ओके वो भी आपको समझना है, आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए। मैं जो बताया वो भी समझने के लिए आपका कॉन्सेप्ट पूरा पहले से क्लियर होना चाहिए। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? अच्छा क्वेश्चन था। बहुत लोग -2 बोल रहे थे, कुछ लोग एरर बोल रहे थे, कुछ लोग 13 बोला है। राइट इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? जस्ट गिव मी द कमेंट। धीरज समझ में आया बेटा? धीरज समझ में आया? राइट इट्स ओके। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द AVL tree। यस धीरज, अच्छा क्वेश्चन था। Yeah, Dheeraj, AVL tree is the important means very less times the question is asked.
Thank you so much. Get up. हाँ, come on, फटाफट करो. The total number of rotations required to make a wheel tree with the given keys. He's asking number of rotations. Okay. Very less people are giving the answer. Okay. Right. So this question, okay, will not take that much time. Okay. So maximum it will take 2 to 3 minutes. If your concepts are clear. Okay, fine. So I am solving the problem. So time up, guys. Okay. The first element you are inserting is what? 14. The next element is what? 4. 4 will go towards right. Sorry, left. Smaller element. So next you check the balance factor. This is 0. This is 1. Okay, no problem. And next is 6. 6 14 se chota. Okay, 4 se bada. 6 will go this side. Now check the balance factor. 0. Okay, this is -1. This is what? 2. So this is called as the LR imbalance. Okay, LR imbalance, you should know the clear cut concept of the rotations. So internally that uses double rotation. So when you make the double rotation, the 6 will come on to the top and 4 will be the left. Okay, right, 14 on the right. Okay, right. This is how the rotation will going to happen internally with the double rotation. I am not explaining in detail. In detail मैं पूरा नहीं समझा रहा हूँ ये कैसे बनेगा. Okay, that you will study in the class. Okay, right. And the next, so यहाँ पे कितना rotations होगा? 2 rotations. Okay, fine. So next is what? 16. 16 will go towards right here. So I think balance factor fine. There is no problem. Next, 32. 32 will go towards right here. So now if you check, this is 0, this is -1, this is -2. So this is RR imbalance. Okay. So RR imbalance internally takes one rotation. So if you make the rotation, how the tree will become? Okay. See here. Okay. 6 on the top, left में 4 ऐसा ही रहेगा. Right में क्या होगा? Okay. It will rotate like this. Right. 16 and left में 14 होगा and right में 32 होगा. So now you check the balance factor. Everything is fine. And next is what? 50. 50 will go towards right side. देखो यहाँ पे 50 insert होगा. So when I insert 50 here, balance factor देखो 0, -1, 0. This is -1. So this is 0. And what's the balance factor of this one?
1 minus 3 minus 2. So there is an imbalance here. So this is called as RR imbalance. RR imbalance internally takes one rotation. When I make the rotation like this, so next what happens? 16 will be on the top, left side में 6 होगा और नेक्स्ट इसका लेफ्ट में 4 होगा और राइट साइड में क्या होगा 32 और इसका राइट साइड में 52 होगा 50 होगा 14 वेयर 14 विल गो 16 का लेफ्ट में 6 का राइट में सेम इट इज जस्ट लाइक ए BST 16 का लेफ्ट में 6 का राइट में सो 14 विल बी हियर ओके now tell me okay now check the balance factor 0 0 0 0 this is minus 1 this is 0 okay is it AVL here yes sir. That is perfect AVL okay now how many rotations are coming here 2 plus 1 plus 1 so that is the total 4 rotations 4 rotations is that clear right is this clear Madhusudan clear beta right okay fine so that is clear for everyone right move on to the next question that is a simple only right next question is interesting hai next question interesting hai read the question this question is very very interesting read the question carefully read the question understand what it's saying this is a different type of question read the question carefully take time but giving the right answer in the first attempt is important I told you need to concentrate on the accuracy
ओके ओके व्हाट हैपेंड, टफ लग रहा है क्या क्वेश्चन? पहले ट्री बनाओ। Okay, so actually it will not take this much time. Okay, right? Okay, see, understand here. Okay, basically it is not a normal binary search. Okay, right? A normal binary search tree mein to everybody knows that if the numbers 9 4 2 7 5 1 8 3 6 0, right? These are the numbers are inserted in that order into an initial empty binary search tree. Okay, and while binary search uses reversal ordering on the natural numbers, like 9 assumed to be the smallest, okay, and 0 assumed to be what, largest, and so on. The pre-order traversal of the resultant binary search tree. तो इसका मतलब जनरल नॉर्मल सर्च, नॉर्मल बीएसटी में अपन क्या फॉलो करते, हाईएस्ट नंबर ओके राइट साइड में जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट? बट हियर इट इज रिवर्स, ओके राइट? हाईएस्ट नंबर लेफ्ट साइड में जाएगा, ओके, स्मॉलेस्ट नंबर राइट साइड में जाएगा. देखो फर्स्ट एलिमेंट यू आर इंसर्टिंग इज व्हाट, 9. ओके, सी दिस हियर, द फर्स्ट एलिमेंट इज 9. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट हियर, 4. देखो एक्चुअली 4 इज व्हाट, ओके, 9 से छोटा है, लेफ्ट में जाना है, मगर इट इज फॉलोइंग इन द रिवर्सल ऑर्डर, सो राइट साइड में जाएगा. ओके, जनरली 9 लेफ्ट में जाना चाहिए, ओके, नॉर्मल नेचुरल ऑर्डर सॉर्टिंग है तो, बट ये क्या है बताओ, क्या क्लियरली दिया है, रिवर्सल ऑर्डरिंग ऑन द नेचुरल नंबर्स. 9 इज अज्यूम्ड टू बी स्मॉलेस्ट, 0 इज अज्यूम्ड टू बी लार्जेस्ट. क्लियर है, राइट? नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बताओ, 2. अब बताओ 2 किधर जाएगा, 2 से छोटा है तो लेफ्ट में जाना, अभी ये राइट में जाएगा. 4 से छोटा है तो लेफ्ट में जाना, मगर अभी ये राइट में जाएगा. ओके, राइट. और नेक्स्ट इज व्हाट, 7. अब बताओ 7, 9 से छोटा है, 9 से छोटा है तो लेफ्ट में जाना, मगर ये राइट में जाएगा. 4 से क्या है, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है तो राइट में जाना, मगर ये क्या होगा, लेफ्ट में जाएगा. 7 विल गो दिस साइड. क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है, राइट? हाँ, राइट. नेक्स्ट 5. 9 से छोटा है, लेफ्ट में जाना, मगर ये राइट में जाएगा. 4 से बड़ा है तो राइट में जाना, मगर लेफ्ट में जाएगा. 7 से क्या है, छोटा है, ओके, लेफ्ट में जाना है, मगर ये राइट में जाएगा. तो 5 विल गो दिस साइड. ओके, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, 1. ओके, 1 किधर जाएगा बताओ, 9 से छोटा है, लेफ्ट में जाना, मगर राइट में जाएगा. अब देखो 4 से छोटा है, लेफ्ट में जाना है, मगर राइट में जाएगा. 1 से छोटा है, लेफ्ट में जाना है, मगर ये राइट में जाएगा. तो 1 विल गो दिस साइड. ओके, नेक्स्ट 8. ओके, 9 से छोटा है, लेफ्ट में जाना चाहिए, मगर ये राइट में जाएगा. 4 से बड़ा है तो लेफ्ट में जाना है, मगर ये 4 से बड़ा है तो राइट में जाना है, मगर ये लेफ्ट में जाएगा. 8 से क्या है, 8 से बड़ा है तो राइट में जाना चाहिए, मगर ये लेफ्ट में जाएगा, तो 8 इधर आएगा. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? क्लियर है, 8 से बड़ा है तो राइट में जाना है, मगर वो लेफ्ट में जाएगा. क्लियर है सबको? ओके, राइट. अब नेक्स्ट 3, सेम मैनर यू फॉलो द सेम थिंग. 3, 9 से छोटा है, लेफ्ट में जाना, मगर राइट में जाएगा. 4 से छोटा है, ओके, राइट है, मगर लेफ्ट में जाना है, मगर राइट में जाएगा. 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है 3, राइट में जाना चाहिए, मगर ये लेफ्ट में जाएगा, तो 3 विल गो दिस साइड. ओके, और नेक्स्ट 6, 9 से छोटा है, लेफ्ट में जाना, मगर राइट में जाएगा. 6 से ओके राइट बड़ा है, राइट में जाना, मगर लेफ्ट में जाएगा. ओके, 7 से छोटा है, मगर राइट लेफ्ट में जाना, मगर राइट में जाएगा. 5 से बड़ा है, राइट में जाना, मगर ये लेफ्ट में जाएगा. तो 6 विल गो हियर. और नेक्स्ट 0, लास्ट 0 है. अब बताओ
9 से छोटा है लेफ्ट में जाना मगर राइट में जाएगा। अब 4 से छोटा है लेफ्ट में जाना चाहिए मगर राइट में जाएगा। 2 से छोटा है लेफ्ट में जाना चाहिए मगर राइट में जाएगा। 1 से छोटा है तो लेफ्ट में जाना चाहिए मगर राइट में जाएगा, तो 0 विल गो हियर। ओके राइट। सो नाउ यू फाइंड आउट द प्री ऑर्डर चलाओ इसको, प्री ऑर्डर चलाए तो क्या होगा 9 4 7 8, उसके बाद 5 6, हाँ उसके बाद क्या होगा ओके 2 3 1 0। ओके राइट। नाउ टेल मी विच वन इज मैचिंग, दिस इज अ प्री ऑर्डर, this is the pre-order. Now which one is matching 9 4 7 8, okay 5 6 2 3 1 0, option A is matching. So A is the right answer. A is the right answer. Is this clear for everyone? Is this clear for everyone? Yeah. Okay, Dheeraj. Okay, very good. So let's move on to the next question. Next question is the again interesting question hai, that is again based on the BST. Okay, very good question. Simple and very good question. Simple and very good question. कैसे सॉल्व करते हैं इसको? ओके, फोकस ऑन दिस. Yeah, Dheeraj, you are welcome. Okay, right. Take care. All the best. Dheeraj, how you solved? Dheeraj, you have given the answer. Okay, very fast. Carefully solve. I said question is tricky. This question is tricky. Not so easy. ओके धीरज दैट्स फाइन. ओके, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करो. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ट्रिकी है. वेरी गुड क्वेश्चन ना. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन.
Okay, so very good. Okay, नहीं, this is a MCQ only, multiple answers नहीं है, MSQ नहीं है. Okay, so I'll explain. Okay, one wrong answer, wrong option, and one right option, so that remaining things you can easily okay solve. देखो, we clearly know that in order, okay, we clearly know that in order traversal of a BST is what? Always sorted order, correct? In order traversal is always the sorted order, correct? So let's say what is the sorted order? 1 to 8 में okay, in order traversal क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, that is the in order. So I am just eliminating option A. Option A को मैं okay pre order समझ के what I will do is I will construct the BST. Okay, I am assuming okay this is the okay pre order. Pre order समझ के मैं ट्री कंस्ट्रक्ट करूंगा. देखो 5 3 1 2 okay 4 okay 7 8 6. Clear, right? So I am assuming this is what okay pre order. Just assume option A is a pre order. Okay, and pre order in order is given. Can you construct the BST binary tree? Yes, I am assuming that is the pre order of a BST. इन ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है. इन ऑर्डर सॉर्टेड ऑर्डर में लिखो, इन ऑर्डर आ जाएगा. ये क्लियर है, राइट? सो आई एम अज्यूमिंग ए इज द करेक्ट प्री ऑर्डर. आई एम टेकिंग दैट सीरीज हियर 5 3 1 2 4 7 8 6 एंड इन ऑर्डर इज ऑलरेडी ओके सॉर्टेड ऑर्डर. सो ये दोनों यूज करके ओके वी शुड नो द हाउ टू कंस्ट्रक्ट द बीएसटी बाइनरी ट्री. अब बताओ प्री ऑर्डर में रूट इज विजिटेड फर्स्ट, तो इसका मतलब 5 इज द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, करेक्ट? अब बताओ वेयर इज 5 इन द इन ऑर्डर? हियर. तो 5 का लेफ्ट में ये सारे होंगे, ये राइट में ये सारे होंगे. इज दैट क्लियर? अब बताओ 5 का लेफ्ट में 1 2 3 4 होगा. ये 1 2 3 4 में नेक्स्ट रूट कौन होगा, कैसे मालूम होगा? चेक करो. प्री ऑर्डर में अगर आप इधर से गए तो पहले कौन मिल रहा है आपको? 3. तो इसका मतलब 3 इज द नेक्स्ट रूट हियर. नाउ वेयर इज 3 इन द इन ऑर्डर? हियर. ओके, 3 का लेफ्ट में ये दोनों रहेगा, राइट में ये रहेगा. इज दैट क्लियर? राइट. अब बताओ 3 का लेफ्ट में 1 2 रहेगा, मगर इधर से गए तो कौन पहले मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है. तो इसका मतलब नेक्स्ट रूट क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा. और 1 कहां पे इन ऑर्डर में? यहाँ पे. 1 का राइट में क्या होगा बताओ? 2 होगा. ठीक है, क्लियर, राइट? सो नेक्स्ट ओके, उसके बाद ओके नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्या होगा बताओ? नेक्स्ट 5 का लेफ्ट में ये चारों था, ठीक है. अब बताओ 3 का राइट में कौन होगा? 3 का राइट में 4 होगा. तो वेरी क्लियर, ये हो गया. अब बताओ 5 का राइट में ये तीनों रहेगा, 5 का राइट में ये तीनों रहेगा, 6 7 8. अब बताओ 6 7 8 में इधर से गए तो कौन पहले मिल रहा है? इधर से गए तो कौन पहले मिल रहा है? 7 ना. ओके 7 मिल रहा है, तो इसका मतलब नेक्स्ट रूट यहाँ पे कौन होगा? 7. अब बताओ वेयर इज 7 हियर इन द इन ऑर्डर? ओके 7 यहाँ पे. तो 7 का लेफ्ट में 6 होगा, राइट, राइट में 8 होगा. ओके, दिस इज द बाइनरी ट्री यू कंस्ट्रक्टेड. ओके, आई अज्यूम्ड ए इज द करेक्ट आंसर. ये इज द प्री ऑर्डर मान के ये दोनों यूज करके बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट किया. पहले क्या किया? पहले बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट किया. अब बताओ ये बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद नाउ टेल मी व्हाट इज द प्री ऑर्डर ऑफ दिस. इसका प्री ऑर्डर बताओ. बाइनरी ट्री तो कंस्ट्रक्ट किया, इसका प्री ऑर्डर बताओ क्या है? प्री ऑर्डर क्या होगा? 5 3 1 2 4. ओके, हाँ, उसके बाद क्या होगा बताओ? प्री ऑर्डर ये बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर 7 6 8, ये आपका प्री ऑर्डर है. ये बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर ये है. बट व्हाट इज द प्री ऑर्डर गिवन टू इन द ऑप्शन ए? ऑप्शन ए में प्री ऑर्डर क्या दिया? देखो 5 3 1 2 5 3 1 2 4. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बताओ? 7 6 8 आ रहा है, मगर यहाँ पे क्या दिया? 7 पहले आया. ओके, मगर ओके 7 के बाद क्या आया? 6 आया. देखो 7 के बाद यहाँ पे 8 आया. तो एक्चुअल प्री ऑर्डर अगर होता तो 7 के बाद 6 आता, मगर यहाँ पे क्या है बताओ? 7 के बाद 8 आया. सो दिस इज द रॉन्ग आंसर. दैट इज द रॉन्ग आंसर. ऑप्शन ए द रॉन्ग आंसर. क्लियर फॉर एवरीवन? ऑप्शन ए क्यों गलत है वो आपको मैं सॉल्व करके दिखाया. इधर दिया. नाउ इन द सेम मैनर ऑप्शन बी को भी आप प्रूव कर सकते हैं, ऑप्शन सी को भी कर सकते हैं, मगर ऑप्शन डी इज व्हाट करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको. ओके, अगर मैं इसको प्री ऑर्डर मान के कर रहा हूं, देखो 5 3 1 2, राइट.
5312474768 यहाँ पे मैच हुआ राइट करेक्ट ओके सो दिस इज द राइट आंसर इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन समझ में आया मैं कैसे किया आपको एवरीवन समझ में तो आया ना राइट ओके वेरी गुड सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन solve the question carefully solve the question this is very interesting question very interesting question generally many students will do the mistake okay first attempt right answer लाना important है carefully solve read the question carefully carefully observe all the options you are searching for the key 271 observe all the options carefully which of the below sequences could have encountered in the search check one by one option carefully one by one option you have to check he is given the key value is what 271 you must follow the BST property
Okay. Requesting everyone to solve. There are so many people in the live. Very less people are giving the answers. Everyone actively participate. Come on, boys and girls. Last 1 minute. Last 1-2 minutes. Everyone must give the answers. Okay, very less people have given the answer. Is it really tough? Is it really tough? Very less people given the answer. Are you finding it difficult? You are able to understand the question? Okay, you find it difficult, tough है? Actually not very tough. Okay, right. Okay, fine. It's okay. I'm going to explain that. Okay. So different people given the different answer. Okay, right. Some are finding it difficult. See, first of all, okay, when in case the BST has been unsuccessfully searched for a key 271. Okay. Now option A is the wrong answer. Okay. Why option A is the wrong answer? I'll explain option A first. So you are searching for 271. So first you found what? 82. 82 के बाद नेक्स्ट अपन सर्च कर रहे हैं 271. तो आपको किधर जाना चाहिए? राइट साइड में जाना चाहिए, बिकॉज बीएसटी 271 बड़ा वैल्यू है, राइट. सो यू शुड गो टुवर्ड्स राइट साइड. तो राइट साइड में या तो आपको 271 मिलना चाहिए, या तो बिगर वैल्यू मिलना चाहिए. बताओ नेक्स्ट क्या मिला है, बताओ. 536. 536 इज वैलिड और इनवैलिड? वैलिड, अलाउड. तो नेक्स्ट उसके बाद अपन 271 मतलब लेफ्ट में जाना चाहिए, तो 102 मिला है. 102 वैलिड, इनवैलिड? वैलिड. तो नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ओके फॉर नेक्स्ट उसके बाद 271 मतलब राइट साइड में जाना है क्योंकि बड़ा वैल्यू है इससे. और नेक्स्ट 439 मिला है, सो दिस इज वैलिड और इनवैलिड? वैलिड. ओके. और नेक्स्ट 285. तो नेक्स्ट ओके 271 सर्च कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, या तो अपने को 271 मिलना या तो इससे स्मॉलर वैल्यू मिलना. सो दैट इज 285. 285 दैट इज वैलिड और इनवैलिड? वैलिड. तो नेक्स्ट अपन सर्च करना है नेक्स्ट 271 है, तो नेक्स्ट किधर जाना चाहिए बताओ. 271 इससे छोटा एलिमेंट है तो लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, या तो अपने को इससे छोटा वैल्यू मिलना, ओके राइट, 285 से छोटा वैल्यू मिलना, या तो 271 मिलना, अपना वैल्यू 271 मिलना. मगर इसको क्या मिला है बताओ. ओके व्हाट इज सेइंग 375 मिला है. अब बताओ 375 अगर इसको मिला है, 375 मिला है, तो इट इज अलाउड और नॉट अलाउड? नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, बिकॉज 285 का लेफ्ट साइड में, 285 का लेफ्ट साइड में ये बड़ा वैल्यू कैसे होगा? नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल रहा है कि इसको ये सारे सीक्वेंस करे तो एनकाउंटर सर्च,
that is first of all that is not at all a valid search. This is the invalid search. Invalid search. Is that clear? This is the invalid search. Okay, right? Is that clear for everyone? Right answer is what? C. Okay, why C is the right answer? I am going to explain. So option A is the wrong answer because it's the invalid search. Okay, search ही invalid है. Okay, successful unsuccessful की बात नहीं कर रहा है. Successful unsuccessful की बात नहीं कर रहा है. The search itself is invalid. Okay, right? क्योंकि 285 का लेफ्ट साइड में अपने को जाना है. 285 का लेफ्ट साइड में ओके बड़ा वैल्यू कैसे रहेगा? नहीं रहेगा. ओके, सो दैट इज द इनवैलिड सर्च. सो नेक्स्ट राइट आंसर इज सी. आई एम एक्सप्लेनिंग ऑप्शन सी हियर. नाउ फर्स्ट ही फाउंड व्हाट 140. तो अपन सर्च कर रहे हैं 271, तो राइट साइड में जाना है. तो नेक्स्ट ही गॉट व्हाट 245. दैट इज वैलिड. वैलिड. सो नेक्स्ट 271 सर्च कर रहे हैं तो राइट साइड में जाना. तो नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट ओके 530. तो 530 इज वैलिड और इनवैलिड? वैलिड. नेक्स्ट अपन लेफ्ट में जाना है. ओके, बिकॉज 271 स्मॉलर एलिमेंट है. तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिला है बताओ? 385. सो 385. सो दिस इज वैलिड. यस. इज इट फॉलोइंग द बीएसटी रूल? चेक करो. राइट साइड में बड़ा एलिमेंट होना, लेफ्ट साइड में छोटा एलिमेंट होना. इज इट फॉलोइंग बीएसटी रूल? यस. नेक्स्ट 271 चाहिए तो नेक्स्ट लेफ्ट साइड में चाहिए. लेफ्ट साइड में जाना है तो 346 था. तो 346 था. सो दिस वैलिड? यस वैलिड. इसका राइट साइड में सारे बड़ा एलिमेंट, इसका लेफ्ट साइड में सारे छोटा एलिमेंट है. तो नेक्स्ट 271 चाहिए तो नेक्स्ट लेफ्ट साइड में ही जाना पड़ेगा. तो नेक्स्ट 270 मिला है तो 270. दिस इज वैलिड. यस वैलिड. ओके, नेक्स्ट अपने को 271 चाहिए तो नेक्स्ट राइट साइड में जाना पड़ेगा. तो राइट साइड में जाना है 307. तो 307. दिस इज वैलिड. यस वैलिड. ओके, राइट. देखो 307, इसका लेफ्ट साइड में सारे स्मॉल एलिमेंट, इसका राइट साइड में बड़ा एलिमेंट है, इसका राइट साइड में सारा बड़ा एलिमेंट. इज इट वैलिड हियर? यस. सो दिस इज द वैलिड सर्च. Okay, right? This is the valid search. Okay, but it is unsuccessful. It is the valid search, but it is unsuccessful. Why it is unsuccessful? Because अपना एलिमेंट नहीं मिला है. Okay, अपना एलिमेंट क्या था? 271. It is valid search, but it is unsuccessful. It is unsuccessful. ओके, दिस इज इनवैलिड सर्च. ओके, यहां पे सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल का कोई बात ही नहीं है. दिस इज द इनवैलिड सर्च. सर्च इटसेल्फ इज इनवैलिड. तो यहां पे सर्च इज वैलिड बट अनसक्सेसफुल. व्हाई? बिकॉज वी डिड नॉट फाउंड ओके आवर एलिमेंट. इज दैट क्लियर? वी डिड नॉट फाइंड आवर एलिमेंट. इज दैट क्लियर? आवर एलिमेंट क्या था? 271. इज दैट क्लियर? सो द राइट आंसर इज व्हाट? सी. सो द सेम मैनर you can eliminate other options. Okay, I am not checking all other options. So A is the completely wrong option. ये क्यों सही गलत है वो मैं बताया और ये क्यों सही है वो मैं बताया. Is this clear for everyone? Right answer is what? C. C is the right answer. Okay, I am writing here. C is the right answer. Is this clear for everyone? Is this clear? अभिषेक समझ में आया क्वेश्चन? अभिषेक समझ में आया? Just give me the comment. Is this clear for everyone? Many people said option B. Aman Sharma. Is this clear for everyone? Right. Question is clear. Okay. Very good. Okay. Yeah. Madhusudan is saying, sir, thank you so much for such a beautiful question. Okay. So, right. Welcome. Madhusudan, welcome. Right. So, that's all. Okay. From, the session. Okay. Right. So we will stop the session for today, right? So all the best for your exam. So I will add okay just 2-3 lines for you, right? So many people are saying okay you are getting panic okay in the last days okay डर लग रहा है, right? See remember डर तो लगेगा ही लगेगा. Okay, right? For example, why? Because let's say you are in the running race. अगर आप कोई रनिंग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर का रनिंग रेस है समझो. ओके, 2 किलोमीटर का रनिंग रेस है. जब पहले अगर आप स्टार्ट किया रनिंग ओके इन द इनिशियल ओके 500 मीटर्स जर्नी, इनिशियल 500 मीटर्स जर्नी यू आर वेरी हैप्पी, बहुत खुशी से आप दौड़ोगे, करेक्ट? तो नेक्स्ट 500 मीटर्स थोड़ा टफ होगा और नेक्स्ट 500 मीटर्स और थोड़ा टफ होगा, मगर लास्ट 500 मीटर्स का जो रनिंग रहेगा वो बहुत टफ होगा. इज दैट क्लियर? ओके, आप सांस नहीं ले पाओगे. इज दैट क्लियर? यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट ओके लास्ट 500 मीटर्स.
ओके रिमेंबर जो कंसिस्टेंटली वो लास्ट 500 मीटर्स का वो भागेगा, ओके राइट, उसी को रिजल्ट आएगा। और लास्ट 500 मीटर जो है वो सबके लिए टफ ही होगा, करेक्ट। तो पहले जो भागेगा राइट, इनिशियल 500 मीटर सबके लिए ओके आसान रहेगा, मगर कंसिस्टेंटली धीरे धीरे क्या होगा, ओके डिफिकल्टी बढ़ेगा, मगर वो डिफिकल्टी को सहना पड़ेगा तुमको, राइट वो डिफिकल्टी को तुमको सहना पड़ेगा, राइट। यू नीड टू बेयर दैट डिफिकल्टी टू रीच द गोल, you need to bear that difficulty, okay right, then only you will completely cross that okay 2 kilometers okay running race। समझ में आया सबको, राइट। सो सेम चीज मैं बोल रहा हूं आपको, राइट। ओके डर लग रहा है तो डर तो रहेगा ही रहेगा, बस ओके वो दिमाग में नहीं आने देना है, राइट। अगर आपको ओके गोल पर आना है, ओके 2 किलोमीटर्स का जो ट्रैवर्स रनिंग रेस है, तो टोटल ओके ट्रैवर्स करना है, तो लास्ट 500 मीटर्स पक्का वो डिफिकल्ट रहेगा ही रहेगा। That is for everyone. But remember जब वो 500 मीटर्स क्रॉस करोगे then only you will reach the goal. Is that clear? Right? So आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, ओके और हार्डवर्क भी किया था आप लोग, 6 to 8 मंथ्स कंसिस्टेंटली आपने प्रिपेयर किया। थोड़ा बहुत डर है तो नो प्रॉब्लम, दैट इज फाइन, दैट इज वैलिड। ऐसा नहीं है कि अभी कोई भी मेरे को ऐसा मैसेज नहीं किया मेरे को कुछ भी डर नहीं है, मैं बिंदास हूं, और सब लोग मैसेज कर रहे हैं थोड़ा डर लग रहा है सर, थोड़ा टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आ रहे हैं सर, ओके ऑब्वियसली इंप्रूव तो करना ही पड़ेगा। क्या रेक्टिफाई करो मिस्टेक्स, कहां पे गलती हो रहा है। देखो आज का क्वेश्चन में भी बहुत लोगों का गलती हुआ है, राइट, बट यू आर लर्निंग, ओके ये ओके राइट। सो इसको कंटिन्यू करो और मार्क टेस्ट अच्छे से देते रहना, राइट। wherever you enrolled, whatever the coaching you studied, right, so practice okay systematically and sincerely practice karo, definitely you will get the good result। Is that clear, right? So if you are having any support, if you require from MadeEasy, so reach us, okay, we are always ready to help you, right? Any support you require, okay, you can reach the faculty or you can reach any okay concerned person, okay, you take the help। Is that clear, right? So that's all from my side, okay, thank you so much for everyone, okay, thank you so much for joining live, okay right। So all the best for your exam, take care, keep in touch।